Jyoti. Good morning to all of you. Friends, S12 is nothing but it is accounting for government grant. Sapna ji, good morning, beta. Manisha Ben. Yes. And Mitesh Bhai Patel. चलो बाकी आज अब्दुल बिब्दुल कुछ नहीं आए लगता है. जयसवाल जी नहीं दिख रहे. यस, सेशंस को मिस मत कीजिए. How many of you done accounting standard 12? Yes, this is a combination batch number 5 plus batch number 6. In batch number 5, I explained each and every concept of accounting standards. And in this batch, we are going to see past examination questions. So those students who are watching these sessions in recorded one or might be in a live session. So it's request to all of you to watch my previous sessions of batch number 5. And plus you will understand this from batch number 6, all past examination questions. So this is a combination batch. In every session, I explained it. Okay. Anandji, good morning, sir. Yes. Yes. Accounting standard 11, tell me, chalo, fatafat, we will revise accounting standard 11. It is divided in how many parts? Yes, tell me in the comment section. Accounting standard 11 कितने parts में divide हुआ था? चलो देखते हैं कितने लोगों को questions आते हैं. तो जल्दी से बताइए. Accounting standard 11, how many बेटा? अच्छा, you have done it from the batch number 4. Okay, no problem. Batch number 4 से कीजिए या batch number 5 से कीजिए. No problem. But past examination questions के लिए कोई भी batch नहीं है. This is a batch where we are taking all past examination questions. Yes. चलो जल्दी से बताइए. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड site cannot be reached. साइट को कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? चेक कीजिए. Okay. So accounting standard, yes, very good. Accounting standard 11 is divided in 3 parts. Number 1, it is forward exchange, foreign currency exchange, then forward contracts and foreign operations. Very good. Nanesh Ingreji. So Uday Vishwakarma is saying, sir, this is RMPD. No, beta Uday, RMPD is a second one. RMPD is a accounting standard. We are not talking about RMPD, but we are talking about accounting standard 11. कितने parts में divide होता है? So one is foreign currency transactions, second one is forward contracts, and third one is a foreign operations. Foreign operations we already covered integral versus non-integral in branch accounting. Integral means dependent branch and non-integral is independent branch. But forward contract is divided in beta. It is forward exchange loss or gain as per accounting standard 11. So first thing there is date of transaction and date of settlement is important. Date of transaction and date of settlement in case of short term. We will divide it in we pass entry in on date of transaction and we settle on the date of settlement. And the difference between date of transaction rate and date of settlement rate, we normally debit it to profit and loss account. Remember, debit or credit. In case of date of transaction and date of settlement, if there is any balance sheet date is in between dot and DOS, in that case, DOB, the date of balance sheet, we pass entry on date of balance sheet. Monetary item, monetary means debtors, creditors, which amounts are determinable, are
recorded at the closing rate, and whatever the difference between date of transaction and date of balance sheet, we record it in the profit and loss account, and date of balance sheet to date of settlement we record it in the P&L account again. Okay, so this is the second case. And in case of exception, so in exception we have divided into two parts. One is depreciable assets and other than depreciable assets. In case of depreciable assets, we exchange difference will be added or deducted from the cost of assets only. And remember, in case of other than depreciable assets, we open FCMI TD account, foreign currency monetary item translation difference account, and this is like your revision of accounting standard 11. I hope you remember each and every case. Forward contract we left with, so today we are going to start with first accounting standard 12, and after accounting standard 12 I'm going to explain it at the end. What is the accounting for government grant के बाद what is the accounting for forward contract. So S11 will be the last 20 to 25 minutes. So हम लोग 20 minutes का session रहेगा last में. So first we will complete with the accounting standard 12, and then we are going to start with accounting standard 11, last part, that is a forward contract. So please skip 2 pages. 2 pages छोड़ दीजिए, and then you can write the index for accounting standard 12, accounting for government grant. तो मैं आपको request करता हूँ all of you, please पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के 2 पेजेस छोड़ दीजिए, और 2 पेजेस के बाद आपको तुरंत लिखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट. नो प्रॉब्लम बेटा. प्रियंका गुड मॉर्निंग जी. क्यों प्रियंका लेट उठी तू? नैनेश ब्रेक देखते हैं, देना होगा तो दे देंगे. सपोज हो गया जल्दी तो, नहीं हुआ तो फिर नहीं देंगे ब्रेक. वैसे भी आजकल आपको ब्रेक की जरूरत नहीं रहती है. कविता गुड मॉर्निंग बेटा. यस, नाउ आई एम with you only for last 3 days. So suppose if I'm getting a time to, I don't think in accounting standard 16 and accounting standard 10, I will get time to tell you all these things, how to study for next 3 months or 4 months, because now your exam will be in the month of May. So remember, last month you don't expect that you will get time for your new concepts. Okay, last month is only for revision. So April महीने को तो आप भूल ही जाइए. तो अप्रैल महीना ये कुछ काम का नहीं है. अप्रैल मंथ इज ओनली फॉर रिवीजन. सो अप टू मार्च यू विल गेट टाइम फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. सो सेम थिंग यू हैव टू डू फॉर योर remaining papers. So remember, writing practice is very important in CA course. So those students who are not doing writing practice at the time of learning the concept, yes, those students are going to suffer in the exam. So it's my request to all of you. Number one, first understand the concept. Okay, concepts are very less, beta. Yes, CA is not a course where you are doing something very extraordinary. So this is only that means whatever the transactions or whatever the law provisions are there, we have to understand that concepts. Okay, so there are in costing also we have to understand the concept first. Then you have to apply your mind. So how to? So while means every subject has its your own peculiarity. Remember, for accounts is a debit and credit game. So in accounts, you just have to understand the concept of what is the entry is debited and which entry will be credited, and accordingly you have to post it in your accounting format. Okay, accounting standards are theoretical one. Just apply your concepts of accounting standards for your questions, and then try to get the answer. So accounting standards are much more easy as compared to other topics. Remember, our syllabus is divided in 2 parts. One is a company accounts and other than company accounts. So company accounts will be there, bonus shares, redemption of preference shares, redemption of debentures, and the time will be there कि ऐसा हो जाएगा कि you will forget all these things. So that's why you have to maintain that 100 pages का notebook, and you have to continuously revise that notebook कि at least you have to understand the concept or recall the concepts on every Sunday. So make your टाइम टेबल इज लाइक दैट कि एवरी संडे, बिकॉज सपोज एक बात मैं बोल के रखता हूँ, मैंने कितना भी टाइम टेबल बना के दिया तो एट द एंड सपोज एक फैकल्टी गिव्स यू टाइम टेबल कि हाँ यू स्टडी इन द सेम वे, बट इट्स अ सेल्फ मोटिवेशन कोर्स. पहली चीज तो सो जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है. सो इंडिपेंडेंटली यू टू डू दैट कि नहीं आई हैव टू डू रिविजन ऑन संडे. इट्स रिविजन आर मैंडेटरी इन दिस कोर्स. तो फर्स्ट थिंग तो ये याद रखो. नाउ देयर विल बी देयर आर 10 to 15 स्टूडेंट्स विच आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी. फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल है, मोहम्मद असलम जी है या अब्दुल भाई है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है कि वो उनको ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद से ही. आलोक रहेगा, आलोक को भी कैसा है कि नहीं भाई मुझे ध्यान में आता है बिकॉज आई हैव नेवर सीन देम, बट आई नो दीज स्टूडेंट्स आर वेरी सिंसियर, दे वॉच माई प्रीवियस सेशंस. ज्ञानेश रहेगा कि ये उनको कुछ तो करने की चाहत है कि भाई प्रियंका होगी तो ये जो स्टूडेंट है ज्योति है, तो ये स्टूडेंट्स जो है ना ये खुद से कुछ करते हैं. या सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे पास है कौन से, हमारे
ओल्ड एज रहने के बावजूद जो कभी हटते नहीं है, उदय जी। तो उदय जी तो जो है वो तो हमेशा क्या करते हैं कि भाई ठीक है, वो तो अंडरस्टैंड भी करते रहते कॉन्सेप्ट्स को। ओके, सो फर्स्ट थिंग तो ये मेरे मेरे लिए तो उदय जी एक हेड्स ऑफ है, रिस्पेक्ट है मेरे लिए तो, कि भाई ये एज में जाके भी वो इतना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो एवरी वन ऑफ यू हैव टू फॉलो दिस टाइम टेबल। सो पहली चीज तो आज मैं बता देता हूँ, टाइम टेबल के बिना कुछ नहीं होगा। यू हैव टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स ऑन एवरी सैटरडे और संडे। ओके, एक दिन रख दीजिए एंड कुछ भी होने दो एट दैट टाइम, फ्रॉम डे 1 टू डे 5, डे लास्ट डे जितना भी होगा, try to understand the concepts. Redemption of preferential, sorry, entry. Redemption of preferential means preferential capital is going to reduce, and preferential capital going to reduce, and premium we are paying excess amount. So preferential capital account debit, premium and redemption account debit to preferential holder, then preferential holder account debit to bank, then CRR we have to create, P&L account or general reserve account debit to CRR. Now ये मेरे जुबान पे है all these entries. Why? Because I revised it on daily basis. बोल नहीं सकता हूँ मैं सीखा सीखा के मैं ट्रेन हुआ हूँ, but you have very less time and you have more pressure. Understand this. So I am best in only one subject, but you have to be a master of all subjects. So आपका जो revision notebook होगा ना, that will help you out. And in 8 months कैसे सर रिवाइज करेंगे इतना सारा? So for normal students it's very difficult. See, merit rankers are different one. But there are average students out of 100, there are 30 average and 60 below average, and 10 are extraordinary. So extraordinary students, they are going to pass. वो तो छोड़ दो. We are talking about remaining 90, and remaining 90 में से those who are very sincere about their study, those students are only going to pass in this CA exam. ओके, एंड दिस एग्जाम, ये कोई भी कितनी भी फैकल्टी आपको कुछ एक्सप्लेन करे, पर जब तक आप खुद रिवीजन नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है. फर्स्ट थिंग तो मैं आपको स्केड्यूल क्या बोल रहा हूं कि स्केड्यूल इज लाइक कि अकाउंट्स के ऑल एंट्रीज यू हैव टू राइट इट इन वन नोटबुक, all ledger pro formas, all important points of that. Then you have to revise index wise revise कीजिए, and don't try to solve again and again these questions. मतलब इतना टाइम भी नहीं है. ओके, 3-4 क्वेश्चंस उठाने के A प्लस कैटेगरी के एंड सॉल्व दोज क्वेश्चंस. सो मेक योर टाइम टेबल. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेन एवर यू आर सिटिंग फॉर स्टडी, इंपॉर्टेंट टाइम टेबल फॉर 7 days, प्रिपेयर प्रॉपर स्केड्यूल when I'm going to revise this chapter. So that schedule will help you out. Okay, and change the subject after every 3 hours. Okay, so 4 subjects at a time you are doing it. So 3 hours के बाद subject बदल दीजिए. This is accounting में you have to make a notebook for all accounting entries and important concepts, and index is with you, तो वो तो आपको काम करने ही वाला है. So that index will help you out at the time of revision. Okay, same technique. Now if you are starting with costing का एक formula book रखिए. आई एम टॉकिंग अबाउट अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. सो कॉस्टिंग का एक फॉर्मूला बुक रखिए, एंड ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ये थ्योरी है, तो ये थ्योरी का एक बुक अलग से रखिए. बिकॉज इन कॉस्टिंग सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और एक 16 मार्क का क्वेश्चन देके जाएगा. 16 मार्क्स क्वेश्चन विल बी अ थ्योरी क्वेश्चन दैट विल गिव यू एटलीस्ट 10 to 12 मार्क्स. एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या होता है कि समथिंग इफ यू आर गोइंग रॉन्ग, यू मे गेट अ चांस टू गेट 0 मार्क्स इन दैट. सो इट्स बेटर that for costing you maintain a separate notebook for formula and for theory, and try to see accounts or costing में difference क्या है. Costing में every question is a different one. In accounts you will get the same adjustments in exam, at least 70% adjustment will be same, but costing में you have to develop your thinking. So whenever you are solving problems, don't try to understand, first try to understand the problem, then try to solve by your own, and then watch the session. So this is how you have to study costing. So in costing and tax, this similar way. So don't try directly with faculty, because faculty knows the answer. So first you have to apply your mind, try to get the answer, and then you can cross verify with your faculty. Okay, so this is how you are learning costing and taxation. And for law, see, if you understand the provision, so its writing is yours. So faculty कितना भी अच्छा पढ़ाए तो भी आपको राइटिंग तो आपको ही को करना है. सो लॉ में डेली 2 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट ऑन डे टू डे बेसिस पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन डेली राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए कि 15 to 20 minutes फॉर 1 क्वेश्चन, 7 to 8 minutes. सो 30 minutes का राइटिंग. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ट्राई टू राइट डेली 3 क्वेश्चंस. 3 क्वेश्चंस लिखने लॉ में. Those students who are giving first group,
अभी बोथ ग्रुप्स देने वालों का ट्रैक स्ट्रेटेजी विल बी डिफरेंट बिकॉज यू हैव टू फिनिश योर सिलेबस नॉट विद इन टाइम बट यू हैव टू रिकॉल ऑल 8 subjects. So first question is in my mind, should I give first group, should I give both groups, or should I give second group? Okay, so very simple answer. First one, if you are good in theory subjects, go with the second group. And you cannot handle the pressure. If you are average student and if you cannot handle the pressure, तो आप both group को मत जाइए. You go for only one group and make it very simple. ओके सो लाइफ में जो लोग टाइम पास करते हैं, ठीक है, एक ग्रुप कीजिए पर अच्छे से कीजिए. एंड विच आर वेरी एवरेज स्टूडेंट्स. सर इफ यू आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हाउ सर एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब क्या? सर एक बार मैंने पढ़ लिया ना तो मुझे याद हो जाता है एटलीस्ट रिवीजन करते टाइम. सो यू आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी. हर एक को पता रहता है कि मैं मेंटल प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ. सी द डिफरेंस बिटवीन धोनीज बैटिंग एंड अदर्स बैटिंग. अभी केएल राहुल रहेगा या बाकी लोग रहेंगे, मेंटली धोनी इज वेरी टफ है वो, उसको हैंडल करना. सो सिचुएशन को हैंडल धोनी कर सकता है, पर वही सपोज विराट कोहली होगा तो एग्रेशन में आ जाता है, गलतियां करके बैठता है. सो ये थिंग्स जो है ना आपको भी ढूंढनी है कि मैं इतना मेंटली टफ हूं क्या. यस, इफ आई एम मेंटली प्रॉपर मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन हैंडल एनी प्रेशर ऑफ 8 पेपर्स, तो गो फॉर बोथ ग्रुप्स. अदरवाइज टुडे इटसेल्फ, तो क्योंकि यू ऑलरेडी गॉट अ लेस टाइम. दो स्टूडेंट्स हु आर फाउंडेशन बैच, एक तो बैच भी ऑलरेडी लेट चालू हुआ, लेट चालू होने के बाद आपको भी टाइम कम मिल रहा है. एंड इफ यू आर फॉलोइंग आईसीआई फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, तो पहली चीज तो मैं बोलूंगा, फिर आप लोग डिसाइड कीजिए, बिकॉज नो वन विल टेल यू कि आपको कि तू बोथ ग्रुप दे. मैं तो बोलूंगा ना बोथ ग्रुप दे करके, पर आपको पता है आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. Okay, so if you are good in theory subjects, then go for the second group, EIS, SM, Advanced Accounts and Eco FM. तो वो आपके लिए उधर प्रैक्टिकल 50-50 है और यहाँ पे 75 प्रैक्टिकल है फर्स्ट ग्रुप में एंड 25 इज ओनली लॉ. सो रिमेंबर, इफ यू आर गुड इन प्रैक्टिकल एंड you can handle the pressure of taxation also, then go for the first group. ओके, सो लाइफ इज वेरी सिंपल, डोंट मेक इट वेरी चैलेंजिंग. तो अभी भी आपने शुरुआत किया तो इट्स वेरी इजी टू क्रैक योर एग्जाम इन मे. फर्स्ट डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर बोथ ग्रुप्स और फर्स्ट ग्रुप. ठीक है, तो ये आज ही मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज लास्ट 2 days आई वोंट गेट टाइम टू डिस्कस विथ यू ऑल. ठीक है, तो अभी ये तो पहली चीज ध्यान में रखो. सेकंड वन मैंने सभी टिप्स दिए हैं, बट फॉलो ओनली वन रूल, रिविजन्स आर मैंडेटरी. सो एवरी सैटरडे संडे डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. ओके, फर्स्ट थिंग कि मैं पिछला रिवाइज करूंगा और फिर ही आगे जाऊंगा. सो सर सेकंड थिंग कि मेनी थॉट्स कम टू माई माइंड व्हेन आई एम स्टडिंग. आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं कैसे प्रेशर हैंडल करूं. सो ये सबके साथ होता है. मैं बैठा पढ़ाई को 1 घंटे में मैं उठ जाता हूं. नो बेटा, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड. सब गेम ये कंट्रोल का है. सीए व्हाट इट टीचेस. सीए टीचेस यू पेशेंस. सीए टीचेस यू बेटा हाउ टू कंट्रोल योर माइंड. वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल देन अदर पीपल. रिमेंबर, अभी मैं भी सपोज आई हैव बिजनेसेस, 2-3 बिजनेसेस है, तो मुझे हर बिजनेस में पता है कि मुझे यहाँ पे कंट्रोल कैसे करना पड़ेगा. ओके, सो आई नो. हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मेरा एक होटल भी है, तो वो होटल में हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा वहां पे जाता हूँ. ठीक है, सो 1 आवर, पर मैं जो 1 आवर वहां पे काम करता हूँ ना, ये जो लोग वहां पे 12-13 घंटे में मेरा सब हिसाब लेके बैठता हूँ, एक एक कौन सा अकाउंटिंग किया है, क्या किया है, कितना हमने क्या क्या रॉ मटेरियल मंगवाया, प्रोक्योरमेंट क्या है. सो वॉट एवर आई स्टडीड इन माई रियल लाइफ में अप्लाई करता हूं. ओके, जब भी क्लाइंट्स की फाइल्स आती है तो मैं उनका बिजनेस समझने की कोशिश करता हूं. सो वी आर एक्सपर्ट पीपल इन दैट. सो वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल. ये समझ लो, सीए पास करना ये सबके बस की बात नहीं है. फर्स्ट थिंग, तो हम लोगों को ये क्या सिखाता है. आज भी मेरी नींद सिर्फ 5 आवर्स है. कल रात को मैं 12:30 बजे सोया, 6 बजे मेरा उठ गया था. आज पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के मैंने सभी क्वेश्चंस को एक बार, टुडे ऑल्सो मैं रिवाइज करता रहता हूं कि मेक इट, ये सिंपल कैसे करूंगा, ये मैं सोचता रहता हूं इतनी बैचेस होने के बावजूद. सो ये चीज ध्यान में रखो कि अपना लाइफ है ना, ये बहुत सेट लाइफ है. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम लोग बाकी लोगों से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब मेरे कॉमन मैन से बोलो, अभी इंजीनियर डॉक्टर के साथ मत कंपेयर करो, पर जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसमें से हम लोग बहुत अलग है, ये दिमाग में डालो. एंड वी आर एक्सपर्ट इन नॉट ओनली इन टैक्सेशन, अकाउंट्स में भी एक्सपर्ट है, कॉस्टिंग में भी एक्सपर्ट है. ये याद रखो कि ये सब्जेक्ट्स को है ना एंजॉय कीजिए.
ये सब्जेक्ट्स को हमेशा एंजॉय कीजिए, ये सब्जेक्ट्स को कभी भी चैलेंज करके मत पढ़िए। सो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वी आर टेकिंग इट एज अ स्टडी। प्लीज डोंट डू दैट। डू लाइक कि यस वी आर डेवलपिंग अवर सेल्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर डूइंग इट लाइक स्टडी, किसी को स्टडी अच्छा नहीं लगेगा। नो वन लाइक स्टडी बेटा। हाँ, बट इफ यू आर टेकिंग इट एज अ चैलेंज कि यस दिस कॉन्सेप्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड एंड क्यों मैं सीख रहा हूं, ये समझ लीजिए। अकाउंट सीख रहा हूं, मुझे मेरी क्लाइंट की फाइल मेंटेन करनी है। ट्राई एवरी टॉपिक, टेक इट एज अ चैलेंज कि ये मैं क्या कर रहा हूं। सेकंड वन, कॉस्टिंग में पढ़ते टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आई हैव टू अप्लाई इन इट माय डेली लाइफ में। हर क्लाइंट का कॉस्टिंग जब तक मैं निकालूंगा नहीं तो वो प्रॉफिट में कैसे आएगा। आई हैव टू टेल हिम वेदर टू लॉक डाउन योर बिजनेस और वेदर यू हैव टू कंटिन्यू योर बिजनेस। शट डाउन करना है, वेयर यू आर गेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, दैट यू हैव टू डिसाइड। टैक्सेशन का आया, एंजॉय कीजिए टैक्सेशन को। हाउ आई कैन सेव माई क्लाइंट्स टैक्स, ये अंडरस्टैंड कीजिए एंड दैट्स व्हाई यू आर लर्निंग टैक्सेशन। सो पहली चीज दिमाग में से निकल दी कि ये स्टडी कर रहे हैं आप। नो, यू आर एंजॉइंग यूर सेल्फ बाय डूइंग दिस कोर्स, ये दिमाग में रखिए। ओके, सो ये कुछ टिप्स थे। 1 ग्रुप 2 ग्रुप्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते सो शुड आई गो फॉर 1 ग्रुप और सेकंड ग्रुप, तो ये चीज ध्यान में रखना है और आगे वैसा कंटिन्यू कीजिए। और प्लीज 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 जब भी पढ़ाई को बैठते हैं ना, तो उस टाइम पे सिर्फ एंड ओनली वन पार्ट स्टडी। डोंट हैव एनी निगेटिव फीलिंग कि मैं स्टडी करते टाइम मैं पास होऊंगा क्या, मेरा ये होगा क्या। नो नो नो, कुछ भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आने चाहिए। यस, जितना, एंड प्लीज बी हैप्पी वाइल स्टडिंग। ये मत सोचिए, मैं हमेशा बोलता हूं मेरे बेटे को भी कि ग्लास भरा होगा, निगेटिव पीपल व्हाट दे थिंक कि हाफ ग्लास भरा हुआ है, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई हाफ ग्लास। बट निगेटिव पीपल थिंक्स अबाउट यार हाफ ग्लास एम्प्टी है। ये मन में से निकाल दीजिए कि निगेटिव थॉट्स आने लगेंगे कि मैं पास होऊंगा क्या नहीं होऊंगा, तो तू नहीं छोड़ने वाला है। तू हमेशा खुद को ये बोलता रहे आई एम गोइंग टू पास, आई एम गोइंग टू पास, आई एम गोइंग टू पास। ओके, माई फादर ही केम विथ ओनली 500 रुपीज। वो हमेशा मुझे एग्जाम्पल देते हैं। वेन he was from very small, not town, he was from village, and when he came to Pune, he had only 500 rupees in hand. मेरे दादाजी स्टेशन पे सोते थे, इतना याद रखो। और वहां से उन्होंने प्रॉपर्टीज डेवलप किए, खुद का घर लिया, ठीक है, बहुत मिडिल क्लास लोग थे। एंड इसीलिए हम लोग देखो, एजुकेशन इज ओनली अवर। यस, मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे कि हमारे पास है ना पैसा नहीं है, हमारे पास एजुकेशन है, सरस्वती जी है, ये याद रखो। और इसके ऊपर हम लोग यहां तक आए। स्लोली स्लोली मैंने उसमें और डेवलप किया। पापा ने यहाँ पे घर किया रहेगा तो मैंने उसमें और डेवलप करके और ये किया, तो डेवलपमेंट करते गए। हमारे पास कुछ भी नहीं था। और सीए कोर्स करने वाले 80% लोग ये जो है ये मिडिल क्लास लोग ही है, इतना याद रखना। तो क्या करना है, नाउ यू डिसाइड। आपकी आगे की फैमिली आपको अच्छी रखनी है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर फैमिलीज ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक कि मेरा एक बार डिग्री हुआ, देयर इज नो रिटायरमेंट लाइफ इन अवर सीए कोर्स। हम लोग कभी रिटायर नहीं होने वाले हैं, इतना याद रखिए। सो फॉलो कीजिए और प्लीज 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 फर्स्ट एग्जाम में पास हो जाइए। थैंक यू। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। Yes. Accounting Standard 12, Accounting for Government Grants. Now, beta, government grant. See, why this standard? Okay. So, if I'm getting a grant from the government, why they are giving grant? Because they want to develop some business. Okay. Now, electric cars, they want to promote it because they do not want, pollution. तो देखो, जो भी इलेक्ट्रिक कार्स लेते थे उनको they are getting subsidy in tax also. तो यू आर अवेयर अबाउट दिस। तो गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि भाई ये सब हम लोग निकाल के ग्रांट दे रहे। नाउ हाउ टू रिकॉर्ड दिस ग्रांट? सो व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ टू रिकॉर्ड दिस ग्रांट? सर रिकॉर्ड, yes, then sir, at what value? If you are recording this grant, then at what value? Then you have to present, where to present, in balance sheet or in P&L. And then
Beta, last part is notes to accounts, which policy you are following. So this standard is not only disclosure standard. This standard is not disclosure standard. This is RMPD analysis. तो देखो ये RMPD analysis है. तो RMPD analysis है, ये याद रखो. ठीक है? RMPD analysis. So government grant is nothing but it's a recognition, measurement, presentation, and disclosure. So the standard is divided in 4 parts. Okay, sir, we understood it. Now, government grant is like you are getting grant not only for better day-to-day business, but it is for your purchase of any asset. Okay, so grant is related to any specific asset. Depreciable might be non-depreciable. Non-depreciable is land, and depreciable any property, plant, and equipment that you are buying it. Okay. Then second one, this asset. Now second one, it is for your day-to-day business. Okay. So for revenue in nature. दूसरा क्या होगा? Revenue in nature. ठीक है? And then promoters contribution. Yes. Promoters contribution means, now you can see here, government is giving you grant for promoters contribution. ये देखिए, ये standard already I explained it in the, okay, related to promoters contribution. And sometimes grant is like non-monetary, means what? You are getting something not in cash, but you are getting land from the government. Sir, I'm getting cash assistance or non-cash assistance. For example, government has given you, allotted you some, beta space आपको allot कर दिया. So this is non-monetary. So yes, fourth one is non-monetary government grant. So either you are getting cash, now that cash might be for fixed asset, for revenue in nature, and for promoters contribution. So you can see here, this standard deals with non-monetary, specific fixed asset, revenue, and promoters contribution. So write down this chart. बस इतना ही रिवीजन में इंपॉर्टेंट है. Non-monetary related to fixed asset, revenue, and promoters contribution. And directly we will switch to problem part. Okay. So अभी ये इतना ही इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ रिवीजन. सो दिस स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट, जैसे S11 इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, S12 इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स, S11 is divided in 4 parts. Now what is the accounting that you have to do? Government grant received, and suppose if you are not following this government grant के conditions, in that case you have to refund your money to government back. Okay, so एक तो आपको पैसा मिलने की एंट्री करनी पड़ेगी या गवर्नमेंट को रिफंड करने की एंट्री करनी पड़ेगी. Good, Sapna. Capital approach and income approach. Very good. Capital approach and income approach. इनकम टैक्स के एक नोटबुक बना कविता, सेक्शन वाइज एवरी चैप्टर के चार्जिंग सेक्शन लिख के रख, और एक छोटी सी नोटबुक 100 पेजेस की बना जिसमें आपका बेयर टेक्स्ट रहेगा. एंड इफ ट्राई टू रीड, बेटा बेयर टेक्स्ट तो मैं बोलूंगा नहीं, पर जितना भी है आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपको एक नोटबुक में लिख के रखो. प्रोविजंस, ऑल इंपॉर्टेंट प्रोविजंस. ओके, और ट्राई टू सॉल्व इट फ्रॉम टैक्समन बुक. टैक्समन का बुक ले लीजिए. तो इनकम टैक्स के लिए एक बुक प्रेफर किया तो अच्छा होगा. टैक्समन के बुक से आपको अच्छा खासा स्कोर भी आएगा. चलो, डन विद दिस. ओके, ओवर. सो नाउ बेटा, यस वी विल रीड वन क्वेश्चन. सो इंडेक्स बना लीजिए. इंडेक्स बना लीजिए फर्स्ट. इंडेक्स बना लीजिए and we'll start with
जुलाई 2021 का क्वेश्चन है, जुलाई 2021 क्वेश्चन नंबर 9, which talks about accounting treatment of government grant. Okay, so this standard is divided in 4 parts. One more time: non-monetary assets, fixed asset, promoter's contribution, and revenue in nature. So this standard is basically divided in 4 parts, and through examples I will explain you different types of beta accounting. Okay, so हर एक का accounting different है, so that we are going to understand in July 2021 के exam question से we will understand the concept. चलो, okay, so जुलाई 21 का एग्जाम का क्वेश्चन निकालिए. इंडेक्स में विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9. So this standard is divided in 4 parts. चलो जल्दी से 4 parts, please write it in the comment section. First write it in the comment section. All these 4 parts बेटा, चलो जल्दी से याद करना है. So याद कब होगा? जब आप comment section में लिखोगे. When you write it in the comment section, automatically you will remember all these बेटा important points. तो चलो write down this in the comment section. The standard is divided in 4 parts. चलो जल्दी जल्दी करो. The standard is divided in 4 parts. Divide it in the 4 parts. Okay, everyone has written. Chalo. So now think from first part. Answer the following questions. Very good. After completion of this accounts batch, I'm going to start with the costing revision. So you can take a benefit of this costing revision. Many of you can take this benefit, and I'm going to solve study material questions and past examination questions, but batch will be, yes, it's like revision. So those students who already purchase my pen drives or Google drives, तो उनके लिए फायदेमंद रहेगा बहुत ज्यादा revisions, because many students think costing is a difficult one as compared to accounts. चलिए, आलोक, एडवांस अकाउंट्स कैसा होता है बेटा? मैं सभी सब्जेक्ट्स आईसीए में दिल्ली में नहीं ले सकता हूँ. वेरी सिंपल, मेरी इच्छा भी रहेगी या नहीं भी रहेगी. क्या होता है, हर एक को, हर फैकल्टी को कुछ सब्जेक्ट्स ही अलॉट किया जाता है, कुछ पार्ट. फिर भी आईसीआई कृपा मेरे मतलब बहुत आपके फीडबैक की वजह से आई एम गेटिंग गुड सेशंस, बट बेटा आईसीआई ऐसा पूरे सेशंस नहीं देती है. तो इसलिए मैं गूगल ड्राइव्स भी आपको अवेलेबल करके देता हूँ. तो आप मतलब आपको जब यदि एडवांस अकाउंट्स का चाहिए या बाकी सब्जेक्ट का भी चाहिए, मेरा कॉस्टिंग एफएम का, तो आप पुणे ब्रांच को कांटेक्ट कर सकते हैं. बट आई कैन नॉट फोर्स आईसीआई की सभी सब्जेक्ट्स का मेरे पास दे दीजिए, और ऐसा हो भी नहीं सकता है. उनको सभी फैकल्टीज को देना पड़ता है ऑल ओवर इंडिया में. ओके, बट योर फीडबैक्स इट मैटर्स, तो आप फीडबैक दे सकते हो हमेशा. ओके, चलो राइट डाउन इंडेक्स.
Index 9 number question. You contact Pune branch beta Manisha Ben. Alps Limited has received the following from government grants during the ended 31st March 2021. Rupees 120 lakhs received as a subsidy from central government for setting up the industrial undertakings in Medak, a notified backward area. Okay. So see now. Okay. So backward area. So beta, this is promoter's contribution. This is called as, we're getting is like promoter's contribution. So now understand what is the accounting treatment for promoter's contribution. So accounting treatment for a promoter's contribution is credited to not capital, but it is credited to capital reserve. And that we will show it under the head reserves and surplus. कहाँ पे बताया जाएगा? We will show it as reserves and surplus. Okay, so this is where to credit beta. What is the accounting treatment? What is the entry? Cash account को debit होगा, cash और bank account debit, and credited to capital reserve. So promoter's contribution talks about credited to capital reserve. किसको credit करना है? Credit करना है capital reserve को. Okay. Yes, very good beta. So this is promoter's contribution. Very good beta. Shiv Sanskari ji. Very good. 15 lakhs received from central government for installation of effluent treatment plant. So beta, this is related to fixed asset. This is related to fixed asset or property, plant and equipment. And last one, rupees 25 lakhs received from government for providing medical facilities to its workmen. Okay, so जो भी company में काम करते तो those are getting medical facilities. So beta, this grant is called as revenue in nature. This is called as revenue in nature. So fixed asset, we have two options. Remember, we have two options. Yes, I'm going to give you answer in writing. So there are two options. Option number one is beta, it is deduction from the asset. And option number two, it is shown as a deferred income. Okay, so what is the entry? Option number one, you will pass entry cash account debit to fixed asset. Cash account debit to fixed asset. So you will reduce your fixed asset. Okay, so whatever grant received, suppose if you are getting this grant of rupees 15 lakhs and your asset is of 50 lakhs. So asset, assume asset 50 lakh ki hai and you are getting 15 lakhs rupees grant. So now you will show asset at 35 lakhs. Asset will be shown at 35 lakhs. So this is option number one. And option number two is that you will record it as cash account debit to deferred GG. So beta, you will open one account which is called as deferred GG account, and it is beta recorded under the head reserves and surplus. Okay, तो ये head कौन से इसमें बताया जाएगा? Reserves and surplus में ये बताया जाएगा. So cash account debit to deferred GG. You will open one temporary account. Temporary account आप open करोगे, which is called it as deferred GG account. So beta, you have two options: either to record it as cash account debit to fixed asset, or second option is that cash account debit to deferred GG. And whenever you are yes, so this is the second one. And third one, when it is in related to capital revenue in nature, so cash account debit to P&L. So you will write it as cash to grant, and grant is transferred to P&L, and grant to P&L. So cash to P&L will be the last entry in case of revenue in nature. मैडम मनीषा बेन, आप पुणे ब्रांच को कांटेक्ट कर सकते हो. आपने पूछा आप गुजरात से हो, वेरी गुड, पर आप पुणे ब्रांच को कांटेक्ट करके आप उनको पूछ सकते हो. ओके,
कैश अकाउंट डेबिट टू P&L. So July 2021 का क्वेश्चन था. Now I'm going to give you answer in writing. How to write this answer only for 5 marks. So one page is sufficient actually. But ICI जो है वो one time I will give the answer for this question and you can write this question का answer for. So ICI expects कि how you are going to record this. Okay. So मैं थोड़ा सा lengthy answer लिख के दूंगा. I will give you writing answer, but you can use shortcuts in exam for these 5 marks. Only 2 to 3 lines accounting treatment for every question. Okay, 3 to 4 lines में निपटा देना. But I will give you the long cut answer. Okay, which is applicable for every question. So write down answer 9. Answer 9. Roman 1. So this is subsidy के लिए मिला. Okay. As per S12, name लिखना एग्जाम में that government grant in inverted comma, accounting for government grant. When, write down answer, grant is related to promoter's contribution grant is related to promoter's contribution. What is promoter's contribution? That is, yes, I will give it in the chart, but don't write it in chart in exam, beta. वो आप पूरा का पूरा paragraph form में लिखे. Chart is only for recalling the answer. That is, total investment or total investment in an business or in an undertaking or contribution towards capital. Contribution towards capital. You don't write it in this chart format in exam. So this is treated as capital receipt. Treated as capital receipt and credited to capital reserve. Credited to capital reserve. Neither used for this capital reserve, neither used for dividend distribution, nor for deferred income. Deferred means in slowly you are writing it in the P&L account. Deferred means what? Divide over years. Okay, deferred is called as divide over years. Deferred means what? Divide over years. Means if I'm getting this grant of, assume I'm getting this grant of 120 lakhs. So I will divide it over 5 years. So every year I'm showing 24 lakhs income, 24 lakhs income, 24 for next 5 years. So I won't show it as directly income. I will record it as deferred income. Okay, but this is not allowed. If it is promoter's contribution किधर record करना है? Directly in reserves and surplus. You cannot use as dividend, means you are not going to record it as income, and even it is not recorded as deferred income. और ये deferred income करके भी record नहीं होगा. Okay. So this is the short note on promoter's contribution. So whenever promoter's contribution का question आएगा, तो you have to write it in the same way, only in the paragraph form.
Should I give you the answer in tree format or directly exam format? Yes, beta, please tell me it in comment section. मैं आपको आंसर डायरेक्टली एग्जाम फॉर्मेट में दूं या ट्री फॉर्मेट में दूं टू रिकॉल इट? यस, ट्री डायग्राम फॉर्म में दूं या किस में दूं? चलो जल्दी से बताओ. ट्री डायग्राम फॉर्मेट में दूं ना? कशिफ भाई साहब बोल रहे हैं, अंसारी जी. इफ यू आर सेइंग कि सर एग्जाम फॉर्मेट में दो, तो एग्जाम फॉर्मेट में जस्ट यू टू राइट इट इन द इसमें लिखना है आपको, पैराग्राफ फॉर्म, जैसे आप बोलोगे वैसा. ओके ओके, डायग्राम फॉर्मेट इजिएस्ट तो यही रहेगा. बट इन एग्जाम प्लीज डोंट राइट इन दिस फॉर्मेट, राइट इट इन द पैराग्राफ फॉर्म. Conclusion for first answer. So after writing this, conclusion will be rupees 120 lakhs credited to capital reserve. 120 lakhs credited to capital reserve. So first answer over. Second one. So index में लिखना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. पहले तो इंडेक्स कंप्लीट करो. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ए कैटेगरी. A category. Accounting treatment A category. Okay. So Roman 1. Now Roman 2. Presentation of grant related to fixed asset. Now second one is related to fixed asset. Method 1. Deduction from asset. So first presentation is deduction from asset. First dash. The grant is shown as deduction from gross value of asset in arriving at its book value. बुक वैल्यू में लाने के लिए हम लोग एसेट में से डिडक्ट करेंगे. वेरी गुड. द ग्रांट इज दस recognize in P&L over useful life of depreciable asset. So grant को we will reduce it from
asset and depreciate it. So we will depreciate it over its useful life. Okay. If grant equals to cost of asset, then asset is shown at nominal value. So 1 rupee का asset ऐसा हम लोग show करेंगे. So asset is with us, but recorded at 100 rupees or 1 rupee. Nominal value. Nominal value means just we have to present it to the reader that we have this asset. Though I'm getting it at free of cost, but we will record it at nominal value. Okay, मतलब 100 रुपए की एसेट है और गवर्नमेंट भी 100 रुपए आपको दे रहा है, तो 1 रुपए पे तो भी रिकॉर्ड करो, एसेट को 1 रुपए पे भी रिकॉर्ड करो. So this is method number 1. Method 2. Method 2. Treated as deferred GG. Treated as deferred GG. So you are not reducing it from the asset. So see, suppose I will only for understanding, in exam don't write it. Asset 100 and grant 25. So 75 will be in first case. Okay. And second case में कैसे present होगा? Asset 100 and deferred GG 25. Okay. So this is a second presentation. So don't reduce it from the asset. Asset will be shown at original cost. In second case, it is recorded at 100 and 25 on the liability side under the head reserves and surplus. कौन से हेड के अंडर बताया जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस. ओके. Now grant related to, now deferred GG में grant related to depreciable and non-depreciable. Depreciable होगा treated as deferred GG, deferred income, recorded in P&L on systematic and rational basis over its useful life. Over its useful life. Okay. Treated as deferred income recorded in P&L on systematic and rational basis over its useful life. In case of non-depreciable, credited to capital reserve, credited to capital reserve,
But there is one exception. Exception is that asset requires fulfillment of certain obligations. Certain obligations, then grant is credited to income. When obligations is fulfilled. Okay. So if obligation is fulfilled, then it is recorded to income. If there is no obligation, then capital reserve. Okay. And if obligation is there, तो बेटा ओवर द पीरियड आप लोग उसको इनकम में चार्ज करोगे. ठीक है. तो कंक्लूजन, आप मेथड 1 से भी जा सकते हो या मेथड 2 से भी जा सकते हो. सो फॉर डेप्रिसिएबल एसेट we record it on the income side over the period, but non-depreciable. Now this is non-depreciable नहीं है, this is depreciable. So non-depreciable होगा तो credited to capital reserve, but there is one exception that certain obligation has to be fulfilled. Method 3. Method 3. Okay. Method 3. But other income means you will record it as the government grant only. In other income, you will record it as government grant. Okay. So in P&L, you will record it as separate item government grant in P&L account. Okay. So P&L account में आप लोग क्या record करोगे? It's like government grant. But everything I have given it in very systematic way. Those students who have not watched my previous session, it's okay. Still they are getting the concept. So ऐसा नहीं होगा कि आपको concept ही नहीं समझ में आ रहा है. So I have taken that question first, in which you are 100% concept clarity. In which you will have 100% concept clarity. Yes. So you got this. So beta, if related to promoter's contribution, then what is the treatment? Capital reserve. If related to fixed asset, you have two options. Either go by deduction from the fixed asset, or second one is a deferred GG. And deferred GG में बेटा again there is depreciable, non-depreciable. Depreciable में कोई दिक्कत नहीं है. You will record it as deferred GG and over the period you will record it as income. Okay. So 25 रुपया जो आपने record किया, फिर ये हर साल सपोज 5 years का लाइफ है, सो -5 एंड P&L क्रेडिट साइड 5 इन ईयर 1. ईयर 1 बैलेंस शीट कैसे दिखेगा? इन ईयर 1 बैलेंस शीट डेफर्ड जीजी 25 इनकम, ईयर 2 5 and here 15 in balance sheet. So similarly then 5 10, then 5 5 and then 5 0 ईयर 5 में खत्म हो जाएगा. So every year P&L में 5 5 5 5 रिकॉर्ड करोगे.
and your deferred GG balance will get reduced. Okay, so it is like this is the accounting treatment of deferred GG. Okay, accounting treatment of deferred GG आप useful life के बीच में उसको over the period P&L के क्रेडिट में डालोगे. कहां पे डालोगे? P&L क्रेडिट. ओके, एंड यूर डेफर्ड जीजी बैलेंस विल गेट रिड्यूस. सो फर्स्ट ईयर 520, सेकंड ईयर 515, थर्ड ईयर 510, फोर्थ ईयर 55 and then 50. Yes, now you got this concept. चलो जल्दी से बताओ. Everything is clear? Yes, beta, everything is clear now. If you have any question, you can ask me. अभी भी नहीं समझा तो. Yes, if you are not getting any concept, please tell me जल्दी से. अरे क्लियर है क्या पिक्चर? Yes, very good, beta. Yash. Yes, beta. शिव संस्करी जी. Yes, correct है. If grant is related to revenue in nature, then credited to capital reserve. Sorry, P&L. And if grant is related to promoter's contribution, credited to capital reserve. Yes, beta. Yes, beta. Yes, 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 yes. ज्योति, वेरी गुड बेटा. चलो तीसरा क्वेश्चन. ए मेथड 3 क्या लिखा है मैंने? सॉरी, नॉट मेथड 3. मेथड 3 कोई नहीं है. रोमन 3 आंसर. व्हाट इज रोमन 3 आंसर? Workmen during the pandemic. Yes, beta. Similar to depreciation, depreciation on the debit side and deferred GG on the credit side. P&L के credit में deferred GG लिखेंगे. Yes, you are correct. Last one. If it is related to beta revenue in nature. So write down. If grant is related to revenue in nature, then you have two options. Option 1, credited to P&L account, separate head, means that grant separate. Government grant is like other income, separate head. Government grant, you will record it under the head government grant on P&L credit side, or separated सेपरेट हेड में अंडर अदर इनकम. किधर बताएंगे? अंडर अदर इनकम. और ऑप्शन नंबर 2, डिडक्शन फ्रॉम expenses. So instead of showing income, you will deduct it from the expenses. अभी इधर क्या हेड है? Here एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में से ये माइनस हो जाएगा. Here employee benefit expenses.
Okay. So third one is grant is related to revenue in nature. So accounting treatment you understood. So in summary format, government related is related to promoter's contribution, then cash to capital reserve. If related to asset, fixed asset, then beta you have two options. One, cash to fixed asset or cash to deferred GG. Second one is cash to deferred GG. And third one is related to revenue in nature, then cash to P&L. चलो चलो जल्दी से बताओ. Yes, so this is beta. Now everything is clear. Answer number 9 over beta. Yes, write it in the comment section beta jaldi se. So all three beta, all three promoters contribution. So write it in the comment section. क्या समझा आपको? Beta, you have Jyoti ji conclusion is that in second one deduction from the asset or deferred GG. Okay, conclusion is deferred GG or deduction from the asset for second question. And third question, conclusion, you can credit it to P&L or deduction from the expenses. This is the third conclusion. Now beta, I will give you the shortcut of these answers. अभी मैं पूरा डिटेल में लिख के नहीं दूंगा. Now in exam you have to write it in this way. If 5 marks the question आएगा, so you have to show it in this way, not in the tree diagram form, but in the paragraph form. चलो 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 कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट. Just want to ask you one question. But I want all answers. All answers. Yes. Abdul ने पूरा लिख दिया. Promoters contribution, cash to capital reserve, fixed asset, cash to fixed asset or deferred GG. Correct है. And revenue in nature, cash to P&L. Very good बेटा. Very good. आलोक ने भी पूरा लिखा. फिक्स एसेट डेबिट नहीं होगा. ये आलोक आंसर गलत है तेरा. फिक्स एसेट डेबिट कैसा होगा? कैश टू फिक्स एसेट और कैश टू डेफर्ड जीजी. प्रियंका आपने एक ही लिखा बेटा. आई वॉन्ट ऑल थ्री आंसर्स. चलो फास्ट टाइप करो. जस्ट आपको मैं पूछ रहा हूं, जस्ट टेकिंग अ फीडबैक, क्योंकि आई मीन हियर इन पुणे, यू आर फ्रॉम आउटसाइड बेटा. तो मैं ये से पूछ रहा था कि आपको ऐसा वर्चुअल में होने के बावजूद, दो यू आर अटेंडिंग इन वर्चुअल, बट कैन यू फोकस, या फेस टू फेस ही अच्छा रहता है? मतलब वर्चुअल सेंटर होने के बावजूद भी, मतलब आईसीआई जो ये रन कर रहा है, कैन यू फोकस कि आपको ऐसा क्लास में जाके फील लेना रहता है, या ये घर पे अच्छे से हो जाता ना, एनी टाइम एनीवेयर, जैसे अपना टैगलाइन है? मतलब आप फोकस कर पाते हो क्या? फेस टू फेस का मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब नाउ अडेज, मतलब मैं अभी फेस टू फेस का एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि व्हाट हैपन, स्टूडेंट ठीक है फेस टू फेस में बोलते, बट वी आर जस्ट टेकिंग फीस फ्रॉम देम, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स आफ्टर 30 days दे आर ऑल्सो गेटिंग बोर, कि भाई आने जाने में हमारा एक एक घंटा जाता है. सो दैट सेविंग ऑफ टाइम दे कैन यूटिलाइज फॉर अदर पर्पज. ओके,
मतलब दोज हु आर वेरी कॉन्फिडेंट, और जिनको घर पे बैठ के भी ध्यान रहता है कि जैसे आपको मैं कमेंट पूछता हूं तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, और जो लोग फोकस करते हैं 100%, अल्टीमेटली फैकल्टी भी मैटर करती है कि फैकल्टी आपको कितना फोकस करवा रही है, वो तो है ही। बट एट द सेम टाइम मतलब मुझे ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वाइल टीचिंग आई एम वेरी कंफर्टेबल इन क्लासेस से ज्यादा मैं वर्चुअल सेंटर, मतलब मैं घर में ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ वाइल गिविंग सेशन। और क्लास में जाने के टाइम पे क्या होता है, मेरा आधा घंटा जाने को आधा घंटा आने को मुझे खुद को लगता है। सो आई कैन थिंक फ्रॉम यूर परस्पेक्टिव ऑल्सो कि आप लोगों का भी कितना टाइम सेव होता है घर पे यदि आप फोकस करके बैठे, तो उल्टा वो 1 घंटा ट्रैवलिंग के बदले में आप खुद के पढ़ाई को दे सकते हो। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। बट अल्टीमेटली यस, फेस टू फेस में थोड़ा अलग फीलिंग रहता ही है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट पे ध्यान देना पॉसिबल होता है। ओके, यस, वेरी गुड निकिता। Nanish, I am from village, so sir, it is beneficial to me. आलोक का बोलना है कुछ फैकल्टीज के लेक्चर बोरिंग होते हैं, नींद आती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज आर बेस्ट। ठीक है। प्रियंका तो बोल रही है कि सर ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये होता है ऑफलाइन में कि फोकस है, बिकॉज देयर आर सो कॉल्ड फ्रेंड्स इन ऑफलाइन क्लास, तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। यस, एंड टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी फैक्टर्स आर बेस्ट। ओके, ज्योति का कमेंट सबसे अच्छा था सर, जिसको पढ़ना ही नहीं है वो वर्चुअल क्या फेस टू फेस में भी पढ़ने वाला नहीं है। वेरी गुड, जिसका कंसंट्रेशन का बात है। वेरी गुड बेटा, सच में। सबसे ज्यादा मजा मुझे कहाँ पे आता है, जूम बैचेस। जूम बैचेस सबसे भारी है। जूम पे इंटरेक्टिव सेशन होते हैं। चलो ठीक है, चलिए। यस, नाउ कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10? तो ज्योति जी, आप ये कमेंट क्यों नहीं डालते हो कि बार बार फैकल्टीज चेंज मत करो करके? मतलब आईसीआई को भी ये डाल सकते हो ना आप एक बार कमेंट कि टैक्स की फैकल्टी बार बार चेंज होती है। तो मुझे भी ये थोड़ा सा अजीब लगता है, फैकल्टी चेंज होने के वजह से एक रैपो चेंज हो जाता है आपका। 10th इज ऑल्सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। चलो सॉल्व कीजिए 10th वन, सी कैटेगरी। 10th नंबर। चलो सॉल्व दिस। मैं 22 का क्वेश्चन था ये। 10 नंबर, प्लीज डू इट। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ऑल 5 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 इन कमेंट सेक्शन। आई वोंट गिव यू नाउ आंसर इन राइटिंग, I will give you it directly.
यस, क्वेश्चन 10 का उधर के उधर ही आंसर दूंगा मैं. क्वेश्चन 10 इज सिमिलर. थैंक यू आनंद जी. चलो आंसर इट. शिव संस्कारी जी. संस्कारी जी. संस्कारी क्यों बोलता हूं मैं? शिव संस्कारी जी, प्लीज राइट फॉर ऑल 5. First one is related to asset. Fixed asset. Capital reserve. Second one, promoter's contribution. Third one, again promoter's contribution. Revenue in nature. And last one is deferred income. Okay, so write down answer.
First one is fixed asset. First one is related to fixed asset. First one is related to fixed asset. Second one is related to promoter's contribution. Third one is also related to promoter's contribution. Fourth one is related to revenue in nature. And fifth one is a deferred income. Setting up a project. Now this is optional, beta. You can treat it as fixed asset, alternatively, or promoter's contribution. Both answers are correct for third one. Third one के लिए both answers are correct. Promoter's contribution also or fixed asset. नहीं बेटा, 80% and 20% is to confuse us. 80% and 20% is to confuse us in the last question. Irrespective, you will record it as a deferred income. Yes, थोड़ा डिफिकल्ट था May 22 का क्वेश्चन. Yes, आलोक शिवलानी जी. Last one is total deferred income, irrespective of percentage. Irrespective of percentage. IMP question बेटा. 10 नंबर को A प्लस कैटेगरी दो. C कैटेगरी दिया गलती से. A प्लस कैटेगरी. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. Yes. Third one and second one promoter's contribution. Fourth one is revenue in nature and fifth one is deferred income. Yes. Chalo. Now do question number 1. Better refund. Yes, beta. Cash to capital reserve. Fourth में revenue in nature and fifth में deferred GG. Very good. Now one more theory question. Question 1. Question 1. Write down. Accounting treatment of grant था. Of grant received था. 9th number and 10th number. First question is refund of GG. Refund of government grant. A category. ये भी A category. Refund of government grant. Write down the answer. When government grant is related to revenue in nature. Revenue in nature. Then बेटा क्या एंट्री होगा इधर. सो इन एग्जाम डोंट राइट एंट्री. P&L अकाउंट को डेबिट देंगे टू बैंक अकाउंट. ओके. इधर दो ऑप्शन होंगे. एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऑप्शन 1, एंड ऑप्शन 2 डेफर्ड जीजी में जितना बैलेंस होगा, डेफर्ड जीजी बैलेंस 0 करेंगे. बैलेंस नाउ 0 डेबिट करेंगे. P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो दिस इज अ सेकंड ऑप्शन. इन केस ऑफ एसेट. एसेट में दो ऑप्शन है, दो मेथड्स, दो प्रेजेंटेशन. एंड प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन में क्या एंट्री होगी. कैपिटल रिजर्व डेबिट
ग्रांट को क्रेडिट मतलब बैंक को क्रेडिट, ग्रांट रिटर्न मीन्स बैंक को क्रेडिट होगा. So now I will give the answer in writing. So in first case it's P&L to bank. In second case it is asset to bank or deferred GG account debit, whatever balance, then P&L account debit to bank account. Beta Jyoti, question number 9. Yes, beta. These entries are reversed. Chalo. So how to write the answer? Yes, writing करके देता हूँ. चलो, write down. First one, answer 1. When GG, government grant, is related to revenue, the amount of refund is debited to P&L. Debited लिखो और charge भी लिख सकते हो. Debited और charged to P&L. Number 2, when GG is related to specific fixed asset. 10th number का आंसर you have to write like question number 9 ना. Question number 9 के जैसा लिखना. पहले provision that for promoters contribution का जो line लिख के दिया, then conclusion. So debited to capital reserve or credited to capital reserve. Okay. When grant is related to specific fixed asset. Method 1. Reduction from cost. When asset is related to reduction from cost होगा तो government grant amount will increase the book value of asset. Book value of asset को increase किया जाएगा. Method 1. Method 2. Credited to GG. Refund will reduce unamortized amount. Unamortized amount means on the liability side. जो liability side पे दिख रहा है will reduce unamortized amount of deferred GG and balance to P&L. So unamortized amount पहले हम लोग डेबिट करेंगे deferred GG and balance P&L को डेबिट देंगे. And method 3, sorry, and question number 3, when GG is related to promoter's contribution, all entries will be reversed, beta. All entries will be reversed. When GG is related to promoter's contribution, write down. When GG is related to promoter's contribution, refund will be debited to capital reserve account.
to capital reserve account. And one question, remember, refund is extraordinary item. Extraordinary item. So separately disclosed. ध्यान में रखना, रिफंड ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, सो सेपरेटली डिस्क्लोज्ड. Any refund is extraordinary item for government grant, any related nature. So you have to show it separately in books of accounts. So accounting treatment of refund. So here we have finished with accounting treatment of refund. Over. Should I give first group? Should I give both? Yes, beta. Refund easy che. All entries will be reversed in case of refund. Refund easy है क्या? चलो answer 1 over. Now answer 2. Question number 2 now. Capital subsidy. Capital subsidy C type. बेटा C accounting treatment. तो आपको आंसर लिखना है. 9th का आंसर you will repeat that grant is related to promoter's contribution. Okay. So question number 3. Messrs A Limited has set up its business in designated backward area with investment of 200 lakhs. The company is eligible for 25% subsidy and received 50 lakhs from the government. Explain the capital subsidy treatment. So capital subsidy credited to capital reserve. So what is the treatment? Credited to capital reserve. Capital reserve. Credited to capital reserve. Question number 2 over. It is related to promoter's contribution. Question 3. Yes. 9, 10, 1, 2 over. Question 3. Messrs ABC Limited purchased a fixed asset of rupees 50 lakhs. Government grant received 20%. 20% means 10 lakhs. Residual value $8 lakhs. Okay. Useful life 8 years. Depreciation straight line. An asset is shown at net of grant. Net of grant means method number 1, not deferred GG. Asset में से reduce किया. Asset में से reduce किया. Okay, so method 1 लिख के रखना. Net of grant means
method 1, and now refundable 7 lakhs rupees due to certain conditions. Past journal entries. Okay. First, write down journal entries. Index में लिखो journal entries for refund. A category. Journal entries for refund. Write down journal entries. Year, particulars, LF, debit rupees, credit rupees. Year, particulars, LF, debit rupees, credit rupees. Debit rupees, credit rupees. नॉन मॉनिटरी ग्रांट बेटा नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है. नॉन मॉनिटरी मतलब विदाउट मनी. इट इज रिकॉर्डेड एट नॉमिनल वैल्यू 100 rupees, 1 rupee. ओके. Remember, in year 2, you will write entry. You will write entry fixed asset account debit, fixed asset account debit to bank account 7 lakhs. कितना अमाउंट है? 7 lakhs. Fixed asset to bank. Being government grant is refunded. So asset increased, bank is credited. Now in year 2, depreciation. Depreciation to asset. Working note 1, being asset depreciated, we don't know amount. And then P&L account debit to depreciation. Being depreciation transferred to P&L. Transferred to P&L. We don't know amount. We don't know amount. So depreciation to asset and P&L to depreciation. Okay? Now write down the answer. Working note 1. Calculation of depreciation of year 2. Of year 2. Serial number, particulars, computation, rupees. Roman 1. Cost of asset.
given 50 lakhs. Given 50 lakhs. Roman 2 less government grant received. Government grant received given 10 lakhs. No, it is 20% of 1. 20% into Roman 1. 10 lakhs. Roman 3. Balance 1 minus 2. 40 lakhs. Roman 4. Less depreciation for year 1. Now depreciation beta. Roman 3 minus residual value. Now what is residual value? 8 lakhs divided by useful life. What is useful life? 8 years. So 40 lakhs minus 8 lakhs, that is residual value. 32 lakhs divided by 8. Answer is 4 lakhs. 4 lakhs. Roman 5 WDB after 1 year. WDB after 1 year. 3 minus 4. What is depreciation formula beta? Cost minus residual value divided by useful life. So depreciation 8 lakhs aaya. So WDB will be 36 lakhs. Roman 6 add refund. Add refund in year 2. So kitna aaya refund? 7 lakhs. So now balance 5 plus 6, 43 lakhs. 43 lakhs is a refund that will be added back. Refund beta add back karenge asset mein. And now depreciation for year 2. Depreciation for year 2. Roman 7 divided by, minus 8 lakh and remaining life is 7 years. Prospective effect. Prospective effect. 43 lakhs minus 8 lakhs divided by 7. So answer is 5 lakhs. Answer is 5 lakhs. See the answer. First cost of the asset. Remember the pro forma. Less government grant received will be deducted. Then balance you will get. After balance, you are going to calculate depreciation. Depreciation mein WDB. Refund you will add. Then again balance. Then depreciation. Revised depreciation. Now this depreciation is revised due to refund. Okay. So refund add करना है. जब गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड लेस किया वैसा रिफंड ऐड करना है. ये याद रखो. अंडरस्टूड बेटा? अरे अंडरस्टूड क्या? Presentation easy. Depreciation is provided on straight line basis. Yes, beta. अरे easy है क्या format? Now you can write this 5 lakhs here in journal entries. Journal entry में लिख दो 5 lakhs, 5 lakhs, 5 lakhs, 5 lakhs. फॉर्मेट इजी है बेटा. वेरी इजी फॉर्मेट. कितने मार्क का क्वेश्चन था ये? 5 मार्क्स. 5 मार्क्स फॉर 3 एंट्रीज. फॉर्मेट इजी. चलो
क्वेश्चन 4, May 17 का क्वेश्चन। राम लिमिटेड परचेस अ मशीनरी नहीं बेटा, फिक्स एसेट टू बैंक। डेफर्ड जीजी कहां से होगा ना बेटा, डेफर्ड जीजी अकाउंट ओपन ही नहीं किया, बैंक को ही डेबिट क्रेडिट किया ना। नेक्स्ट, राम लिमिटेड परचेस मशीनरी ऑफ 80 लाख, यूजफुल लाइफ 4 years, रेसिडुअल वैल्यू 8 lakhs, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड 32 lakhs, show journal entry to be passed at the time of refund of grant and the value of PPE in 3rd year and amount of depreciation of remaining 2 years if remaining 2 years, okay, if grant is credited to fixed asset and grant is credited to deferred GG. Chalo, write down. Refund entries. Case 1. Yes. Now beta, tell me what is case 1. Grant is, yes beta, grant is credited. किसको क्रेडिट किया? So bank to fixed asset. Grant is credited to fixed asset. Chalo. Now I won't give you format. I won't tell you format. Now you will tell me line by line. सबसे पहले calculation of balance in fixed asset. Balance in fixed asset year 3. Serial number, particulars, computation, rupees. Serial number, particulars, computation, and rupees. Roman 1. Cost of asset. Given. कितनी कॉस्ट है? 80 lakhs. Now you tell me Roman 2. Yes beta, what is Roman 2? Think. I'm not going to give you answer. Yes, फटाफट नहीं आंसर दूंगा. चलो, रोमन 2 क्या लिखेंगे? चलो, रोमन 2. Roman 2, yes, just tell me particulars. Very good. Grant, GG, government grant received. Given. How much beta? 32 lakhs. So deduction from the asset. Net. 1 minus 2. Yes, what is net amount? 48 lakhs. Roman 4. Yes, what is Roman 4 beta? Yes, straight line method or WDB method? Straight line method. Depreciation for year 1. And similarly, 5 is depreciation for, पहले depreciation calculate करते हैं. Roman 3 minus what is salvage value? Salvage value beta 8 lakhs. And what is useful life? 4 years. So depreciation for year 1
40 lakhs divided by, this is 10 lakhs. This is 10 lakhs. And similarly, depreciation for year 2. Same as year 1. 10 lakhs. Roman 6, WDB at the end of year 2. 3 minus 4 minus 5. 28 lakhs. Roman 7, add refund. Roman 6, refund kitna given? Refund given 32 lakhs. So beta 8 balance 6 plus 7 28 plus 32 60 lakhs. 60 lakhs. And Roman 9 depreciation for year 3. Roman 8 minus residual value 8 lakh and revised remaining life. Revised life is given 2 years. 2 years remaining question में दिया है. So 52 lakhs divided by 2 years. So answer is 26 lakh. So answer is 26 lakhs. Okay. Answer is 26 lakh. Now answers for case 1. Answers. Roman 1. What is asked in the question, beta? What is asked in the question? Answer 1. Journal entry, value of fixed asset and depreciation. Okay. So answers. Roman 1. What is journal entry? Fixed asset को debit होगा to bank. Fixed asset to bank. कितना refund दिया रे? 32 lakhs. Roman 2. What is asked? What is asked? Value of asset. Value of asset in third year. Value of asset in third year 60 lakhs. 60 lakhs. And depreciation in third year 26 lakhs. So these are answer for fixed asset to bank, value of asset and depreciation. Very good. Okay. Now presentation 2. Case 2. Grant is credited to deferred GG. Grant is credited to deferred GG. GG. Grant is credited to deferred GG. Serial number, particulars, competition, rupees. Before depreciation, beta. Value before depreciation. Manisha Ben, good question. Sir, balance कौन सा बताना है? In third year means beginning का balance बताना है. Not after depreciation. Beginning का बताना है. Very good question, beta. Roman 1, beta. Cost. Given.
કેટલી કોસ્ટ છે 80 lakhs. Now beta don't deduct this amount. कौन सा ग्रांट का अमाउंट डोंट डिडक्ट. डोंट डिडक्ट ग्रांट अमाउंट बिकॉज डेफर्ड जीजी में है. सो बैलेंस इन एसेट. ओके. Less depreciation for year 1. Depreciation for year 1. Roman 1 minus 8 lakhs divided by 4 years. 72 minus 4. $80 lakhs ही है ना. So answer is 18 lakhs. Answer is 18 lakhs. Roman 3, same depreciation. Depreciation for year 2. Same as year 1. 18 lakhs. WDB at the end of year 2. At the end of year 2, Roman 3. Roman 2 minus Roman 3 minus Roman 4. Sorry, 1 minus 2 minus 3. 1 minus 2 minus 3. Roman 5. Depreciation for year 3. Depreciation for year 3. Roman 4 minus 8 lakhs divided by revised remaining life 2 years. So 44 lakhs minus 8 lakhs divided by 2. Again 18 lakhs. 18 lakhs is the depreciation for year 3. Okay. One more note. Balance in government grant. Balance in government grant. Roman 1. Deferred GG. Given. How much balance is there, beta? Yes, you got the grant of 32 lakhs. Roman 2. Amortize in year 1 and year 2. Year 1 and year 2. Roman 1 divided by 4 years and same as year 1. So 8 lakhs, 8 lakhs. Roman 3 balance 1 minus 2. 16 lakhs. 1 minus 2, 16 lakhs. Okay. Balance in year, balance in the end of year 2. $16 lakh. Deferred GG account debit 16 lakh. To bank, you refunded 32 lakhs. So answer से अभी P&L चा डेबिट ला 16 लाख. P&L डेबिट 16 लाख. Roman 2. Balance in year 3. Balance in year 3. 44 lakhs.
What is the balance in year 3? 44 lakhs. And Roman 3, depreciation. Depreciation in year 3, 18 lakhs. So this is a summary. Summary beta. Deferred GG पूरा zero हो जाएगा. Balance now zero. After this refund entry. Over. Yes, beta. Over. इजी है. अरे इजी है क्या? Have patience, beta. Only 3 questions left. Yes. Deferred GG. देखो, in both answers, you can see both answers. एक में फिक्स देखो, टू बैंक सेम है. टू बैंक सेम है. बट एक में फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट है, तो एक में डेफर्ड जीजी पीएनएल अकाउंट डेबिट है. डेफर्ड जीजी का बैलेंस जीरो करके पीएनएल को डेबिट दिया. वैल्यू इन एसेट एक में 60 lakhs हो गया एंड डिप्रिसिएशन 26 लाख हो गया. ओके. और एक में बेटा वैल्यू ऑफ एसेट 44 lakhs एंड 18 lakhs इज डिप्रिसिएशन. सो दिस इज अ डिफरेंस. सो यू कैन सी एक में डायरेक्ट 32 lakhs ऐड हुआ, एक में डायरेक्ट 32 lakhs ऐड हुआ, एक में सिर्फ 16 लाख रुपया जो था उतना ही डिफरेंस है. पीएनएल में 16 लाख गया. तो बेटा एग्जैक्टली 16 लाख का डिफरेंस है और 16 लाख का डिफरेंस 8-8 लाख रुपया. इधर देखो, इधर पीएनएल में 16 lakhs जा रहा है, तो डिप्रिसिएशन की अमाउंट कम हो जाएगी. सो दो स्टूडेंट्स हु वांट मोर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. ओके. सो पीएनएल in case of deferred GG. So what is the difference? I will give you the conclusion only for your understanding. Conclusion. If deferred GG account is open, yes, this is a conclusion for those students जो बहुत होशियार है, intelligent students. If deferred GG account is open, then refund is debited to P&L. रिफंड इज डेबिटेड टू पीएनएल. पीएनएल को डेबिट हुआ, जैसे कि यहां पे ₹16 lakhs. कितना रुपीज? 16 lakhs. देयरफॉर depreciation amount gets reduced by rupees. देखो depreciation कितने से रिड्यूस हुआ? 8 लाख से. Depreciation amount is reduced by rupees 8 lakhs for next 2 years. तो next 2 years मतलब 16 lakhs जो है अभी. इन फर्स्ट केस इफ एसेट इज डेबिटेड तो आपका 8-8 लाख से डिप्रिसिएशन ज्यादा आएगा नेक्स्ट 2 years में. हाँ. एंड इफ एसेट इज डेबिटेड इन रिफंड केस, depreciation amount gets increased by rupees 8 lakhs. Beta, this is the observation. So both cases will give you different answer of depreciation after refund. After refund में दोनों केसेस अलग अलग आंसर देगा. देखो अप टू रिफंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप टू रिफंड कोई प्रॉब्लम नहीं. बट इन केस ऑफ रिफंड, first case, this is case 1 and this is case 2. In first case, case 1 में एसेट को डेबिट देना है. किसको डेबिट देना है? एसेट को डेबिट देना है. एंड इधर पीएनएल को डेबिट देना है. और उसी के वजह से पीएनएल को डेबिट दिया, अब भी पीएनएल को डेबिट दिया तो फ्यूचर में डेप्रिसिएशन कम होगा. अब भी पीएनएल डेबिट. नाउ
पी एंड एल डेबिट एंड डेप्रिसिएशन लेस, ये इसका कंक्लूजन है. इधर नाउ एसेट डेबिट एंड फ्यूचर में डेप्रिसिएशन इंक्रीजेस. ओके, अंडरस्टूड द डिफरेंस. बेटा डिफरेंस उन्हीं को समझेगा जो उतनी लेवल रखते हैं, समझने की लेवल रखते हैं, उन्हीं को समझेगा. दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस केस, रिफंड केस. बस बाकी ये स्टैंडर्ड में कुछ भी दम नहीं है. हाँ, 5 मार्क के लिए लेंदी था, 5 मार्क के लिए लेंदी था. कंक्लूजन प्लीज डोंट राइट इट इन एग्जाम, डोंट राइट इन एग्जाम. सो बेटा डिफरेंस कहां पे आएगा? इन रिफंड केस. रिफंड केस में पूरा पी एंड एल डेबिट हो जाएगा और केस 1 में एसेट डेबिट होने वाला है. यस शिव संस्कारी जी, यस यस बेटा. आलोक वेरी गुड बेटा. डेफर्ड जीजी कॉन्सेप्ट इज बेटर. दिस इज बेटर कॉन्सेप्ट बिकॉज प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या बोलता है? आज लॉस को रिकॉर्ड करो, ये फ्यूचर में लॉसेस को रिकॉर्ड करेगा, डेप्रिसिएशन. बट अब भी कौन डेबिट करेगा? इफ लॉस मोर, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट. वेरी गुड बेटा. सो केस 2 ये मोर प्रेफरेबल होनी चाहिए इन रियल लाइफ. ओके, सो अप टू रिफंड कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अप टू रिफंड ओनली प्रेजेंटेशन डिफर्स. बट आफ्टर रिफंड केस 1 एसेट को डेबिट देगा, केस 2 पी एंड एल को डेबिट देगा. ओ सर, अब भी समझ में आया. नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंस. डिफरेंस इज नॉट टिल रिफंड, ओनली प्रेजेंटेशन डिफर्स. ओके, पी एंड एल इज सेम. Up to refund, P and L is same. But after refund, your P and L statement gets changed. केस 1 में एसेट को डेबिट होगा, केस 2 में P and L को डेबिट होगा. सर आई रिवाइज्ड इट मिनिमम 3 to 4 times. सो अप टू रिफंड ओनली प्रेजेंटेशन में डिफरेंस आएगा. एक एसेट में से रिड्यूस होगा, एक एसेट फुल अमाउंट से दिख के डेफर्ड जीजी लाइबिलिटी साइड पे दिखेगा. बट आफ्टर रिफंड पूरा पोजीशन चेंज हो जाएगा. आफ्टर रिफंड, मेरी भावनाओं को समझ लो. आफ्टर रिफंड एक एसेट को डेबिट करेगा और एक पी एंड एल को डेबिट करेगा. ओके, इजी है. थोड़ा सा पॉइंट लगेगा समझने को, पर मुझे जो बोलना है वो समझ लीजिए. यस यस, थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना. हाँ, अभी वो स्टूडेंट्स को ही समझेगा जिनकी औकात है बेटा, जो लेवल रखते हैं अंडरस्टैंडिंग का. 90% इन सीए इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स they won't understand the difference between case 1 and case 2. Case 1 or case 2 is going beta, only presentation differs up to refund. बट आफ्टर रिफंड पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा. आफ्टर रिफंड पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा बेटा, बदल जाएगा पूरा का पूरा लाइफ. उसमें क्या होगा? एक में केस 2 में पी एंड एल को डेबिट होगा एंड केस 1 में एसेट को डेबिट होगा. सो पी एंड एल को डेबिट हुआ तो बट ऑब्वियस उसका डेप्रिसिएशन बाद में फ्यूचर में कम हो जाएगा, एंड एसेट को डेबिट हुआ तो बाद में फ्यूचर में डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा. ओके, एक पी एंड एल को डेबिट कर देता है तो फ्यूचर अच्छा जाएगा. आज खर्चा लगेगा, आज खर्चा है पर फ्यूचर अच्छा है. और दूसरे केस में और पहले केस में आज खर्चा नहीं है सर, एसेट को डेबिट है पर फ्यूचर में खर्चा ही खर्चा है. बस इससे ज्यादा एक्सप्लेन मत करने लगा हूं. यस, बस हो गया, इतना एक्सप्लेनेशन काफी है. यस, थैंक यू सपना जी. आप समझो और नहीं समझ में आया हो ही नहीं सकता. बेटा फोकस क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ी डिफिकल्ट है तो बच्चे ना समझने की कोशिश नहीं करते कि एग्जैक्टली डिफरेंस कहां पे है. वेरी गुड आलोक, वेरी गुड. चलो, सो वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो. इंडेक्स लिखा गया? इंडेक्स लिखो, चलो इंडेक्स लिखो. क्वेश्चन 4, refund in case of fixed asset. अच्छा, इधर ही कंक्लूजन लिख के देता हूं. रिफंड इन केस ऑफ फिक्स एसेट, ए कैटेगरी. इधर लिखो केस 1
asset is debited, therefore depreciation is more after refund. Depreciation is more after refund. Case 2, P&L is debited, therefore depreciation is less in future after refund. अभी तो पूरा याद हो जाना चाहिए ये स्टैंडर्ड, मतलब विथ लॉजिक याद आना चाहिए बेटा. कविता, ड्यूटी ड्रॉबैक यूर इनडायरेक्ट टैक्स फैकल्टी विल टेल यू. ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब जो एक्स्ट्रा ड्यूटी हमने भरी थी वो वापस लिखना है. कितना लिख के दूर है आपको? एवरीथिंग इज स्पून फीडिंग करते हो. हाँ, इतना कौन स्पून फीडिंग करवाता भाई? हमें तो कोई बताता भी नहीं था, ये हमारी रिसर्चेस होती थी. सर सिर्फ बताते थे दिस इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वाई क्यू क्यू कुछ नहीं. लॉजिक आप लोग घर पे देखो. चल रहे बाबा, आगे चलो, बढ़ते रहो. यस, 5 नंबर. चलो 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 फास्ट. 5 नंबर. ऑन 1/4/2014 XYZ Limited received grant of rupees 100 lakhs for an acquisition of new machinery costing rupees 500 lakhs. अच्छा, 500 lakhs का कॉस्टिंग है. द ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट. प्रियंका, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा मुश्किल है आज. मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहला मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही करवाऊंगा, फिर एज 16 शुरू करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में. आज क्योंकि वो थोड़ा 15 मिनट हमारा मोटिवेशन में गया शुरुआत के, सो मॉर्निंग मोटिवेशन यू गॉट. ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हो जाएगा, डोंट वरी, आई विल कंप्लीट इट इन नेक्स्ट सेशन. अभी ये आज कंप्लीट कर लेते. 3 क्वेश्चन तो बाकी है, 5 6 7 8. खत्म खत्म खत्म. चलो जल्दी. यस, एवरी वन ऑफ यू 15 मिनट्स में करना है. 5 मार्क के क्वेश्चन है. एक तो बहुत सिंपल है, 1 मार्क. 6 इज वेरी इजी. 7 और 8, 3 क्वेश्चन बाकी है. चलो 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 फास्ट. रिमेनिंग 2 इज योर होमवर्क. Credited to cost of asset. Yes, the grant was received and credited to cost of asset. The lifespan of the machinery is 5 years. Lifespan is 5 years. The machine is depreciated on 20% WDB method. So बेटा credited to cost of asset मतलब case 1 हो गया. This is case 1. Asset में से reduce किया. The company had to refund the entire in 2nd April 2017. After 14 गया, 15 16 मतलब 3 साल तक. 3 साल के बाद रिफंड देना है. ओके, रिफंड की एंट्रीज बताओ. ओके सर, यस, रिफंड की एंट्रीज बताते आपको, कोई बात नहीं. चलो 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 फास्ट. यस, चलो प्रेजेंटेशन. चलो चलो प्रेजेंटेशन. रिफंड इन केस ऑफ WDB मेथड है ये. शुड आई गिव यू शॉर्टकट ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा? शुड आई गिव यू शॉर्टकट? चलो, डेप्रिसिएशन का शॉर्टकट मैं आपको देता हूं. तो टू सेव यूर टाइम, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कॉम्प्यूटेशन, रुपीज. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कॉम्प्यूटेशन, रुपीज. रोमन 1, कॉस्ट ऑफ एसेट. कॉस्ट ऑफ एसेट और सीरियल नंबर के बदले में डेट लिखो. इंस्टेड ऑफ सीरियल नंबर राइट डाउन डेट.
1 अप्रैल 6 1 अप्रैल सॉरी 1 अप्रैल क्या था? 1 अप्रैल 14 1 એપ્રિલ 14 કેટલાની એસેટ છે? 100 lakhs નહીં 500 lakhs given 500 rupees in lakhs less government grant received given કેટલાની government grant 100 lakhs net 1 minus 2 now depreciation 14-15 का depreciation 14-15 का depreciation so 14-15 at the rate of 20% under WDB. So Roman 3 into 20%. See the depreciation. Otherwise in exam don't use shortcut. ठीक है चलो रहने दो 80 अच्छा नहीं तो लिख लो 15-16 depreciation 15-16 का depreciation %20 अभी देखो शॉर्टकट इज 1 minus 0.2 शॉर्टकट दे रहा हूं 1 minus 0.2 into first year depreciation is equal to कीजिए so 1 minus 0.2 calci will give you directly shortcut 0.8 that is rate of depreciation. What is 0.2? Rate of depreciation 20% मतलब 0.2 30% मतलब 0.3. So what is the shortcut? Shortcut is that शॉर्टकट है शॉर्टकट ऑफ डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैसे करना है सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू अ कंपल्सरी ऐसा ही करना है yes don't consider first year depreciation and then multiplied by 0.8 no it won't give you answer so into first year depreciation इज इक्वल टू किया तो यू विल गेट सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन वापस इज इक्वल टू किया तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन ओके गॉट द कॉन्सेप्ट तो इधर हमें क्या करना है इधर 0.2 एंड फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 80 है सो टेक ऑन कैल्सी 1 minus 0.2 मीन्स 0.8 into 80 तो आपको कितना आंसर मिलेगा 64 और वापस इज इक्वल टू किया तो कितना आंसर मिलेगा 51.2 सो दिस इज अ शॉर्टकट ऑफ कैल्सी ये शॉर्टकट ऑफ कैल्सी है WDB मेथड का शॉर्टकट है शॉर्टकट ऑफ डेप्रिसिएशन WDB मेथड सेकंड एंड थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन डायरेक्टली अदरवाइज क्या होगा अदरवाइज यू हैव टू टेक बैलेंस देन अगेन डेप्रिसिएशन अगेन बैलेंस अगेन डेप्रिसिएशन सो इंस्टेड ऑफ दैट शॉर्टकट यूज किया यस शॉर्टकट समझ में आया एंड अगेन इज इक्वल टू किया तो ये मिल जाएगा 64 एंड 51.2 सो दिस इज 16-17 लेस डेप्रिसिएशन शॉर्टकट है ये सो 1417 WDB at the beginning तीनों का नेट बैलेंस 400 minus 80 minus 64 minus 51.2 लीजिए कैल्सी पे 400 minus 80 minus 64 minus 51.2 204.8 204.8 फिर उसमें ऐड किया रिफंड
ऐड किया रिफंड, रिफंड इज गिवन, कितना रिफंड ऐड किया 100, सो नेट 304.8 and now 1718 depreciation at the rate of 20%. So 304.8 into 20%. 60.96. 60.96. $60.96. You got the shortcut? Shortcut easy છે. $60.96 will be the answer. Uday, wrong answer, beta. $1718 का आंसर depreciation का. So what are entries? Entries you can write. What is the treatment? Write down. Refund entries. Refund entries. Fixed asset account debit. Refund entries 1718 में 1st April और 2nd April 17. Fixed asset account debit to bank 100 and then 31st March 18. Depreciation account debit to asset, to fixed asset. How much? 60.96. And then P&L to depreciation. $60.96. बस खत्म है रे. हो गया लास्ट 2. So this is a shortcut. हो गया लास्ट 2. So what is the index part, beta? What is the index part? 5 number question. बेटा मिड ऑफ द ईयर में रिफंड होगा तो उतना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 6 मंथ्स का वगैरह. गुड क्वेश्चन टीशा, वेरी गुड बेटा. 5 नंबर क्वेश्चन, रिफंड इन WDB मेथड. रिफंड इन WDB मेथड. ए कैटेगरी 6 गवर्नमेंट रिफंड in promoters contribution. GG refund in promoters contribution. GG refund in promoters contribution. Capital reserve को debit. Z category. May 2019, as per provision of S12, government grant is related to promoters contribution, which is refundable, which is reduced from the capital reserve. True. This is true. Better Tisha, now we will solve your question. If refund is after 2 months. Seven number.
बेटा दिस इज नॉट 12 नंबर, इज नॉट बेटा गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन, दिस इज इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन. गलती से आ गया, गलती से आ गया 12 नंबर. सो 11 इज योर होमवर्क. 11 इज वेरी इजी रिफंड में. हाँ, नाउ यस लास्ट 2 है. 7 नंबर लास्ट लास्ट, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा. आई नो 9:27, थोड़ा सा पेशेंस. On 1st April 16 received government grant rupees 60 lakhs costing 300 lakhs. Same question है. The grant is credited to cost of asset. Case 1. Case 1. The estimated useful life 10 years. WDB ये कुछ यूज नहीं है. 10 years to confuse us. 10 years to confuse us. Depreciation 10% because WDB method. WDB method में useful life is of no use. Okay, to confuse us है. So useful life का कुछ मीनिंग नहीं बता है WDB method में. हाँ, यदि SLM method is there, then it is useful. 10 years. Salvage value and useful life. The company has to refund in June 2019. June 2019 मतलब अप्रैल एंड मई डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे इन जून 2019. मतलब 16, 17, 17, 18 2 साल, 18, 19, अच्छा 3 साल का डिप्रिसिएशन. एंड दिस इज इन 4th ईयर 1920. This is in 4th year. So you have to provide depreciation till year 3 and June 20 means 2 months depreciation. 2 months ka depreciation, extra 2 months depreciation. And then refund. Okay. Chalo. So how to present the answer? Yes, beta. Now shortcut only. शॉर्टकट ही यूज करेंगे. कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इन ईयर 4 और ईयर कौन सा बेटा? 1920. ईयर particulars computation rupees in lakhs. चलो, calculation of depreciation in year 1920, year particulars computation rupees in lakhs. 1st April 2016 cost given 300 less GG received, government grant received in exam, write full forms 60, balance 300 minus 60 240. 2016-17, 17-18, 18-19 depreciation at 10% WDB, at 10% WDB, at 10% WDB. Shortcut is 1 minus, what is the rate of depreciation beta? 10% into first year. It is into, no, in first year it's very simple. In first year it is 240 into 10%, 24. And here 1 minus 0.1 into 24 is equal to, and wapas is equal to. So 1 minus 0.1 means 0.9 into 24, 21.6, and wapas is equal to क्या तो 19.44. 1st April 2019 WDB at the beginning. WDB at the beginning 240 minus 24 minus 21.6 minus 19.44.
240 minus 24 minus 21.6 174.044. 174.96. Sorry, 174.96. Now red pen. 30th June 2019. Sorry, 1st June 2019. Less depreciation. Red pen, beta, for 2 months because refund is in the month of June. So 174.96 into 10% into 2 by 12. 2 by 12. 2.916. Balance 174.96 minus 2.916. 172.044. Add refund. Add refund. Given 60. So you will get 232.044 less depreciation, red pen, less depreciation for 10 months. 232.044 into 10% into 10 by 12. 3.8674. नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ. 232.044 into 10% into 10 by 12. Sorry, into 10 by 12, 19.337. So there are two depreciations, 2 months and 10 months. Okay. So what are entries? Entries. Machinery to bank, 1st June. To bank. Machinery to bank, 60. Then 31st March 20. Depreciation to machinery. Two months, which is equal to 2 months, 2.916. And 10 months is equal to 19.337. 22.253. And then P&L to depreciation. On 1st June plus 31st March, ये दोनों entries. Depreciation 2 times. Easy. But a A plus category question because 2 months and 10 months depreciation is here. 2 months and 10 months. Write down. इंडेक्स में लिखो. इंडेक्स में लिखो.
similar to similar to 5 similar to 5 but 2 months plus 10 months depreciation, as refund is in between. As refund is in between. A plus. A plus. Similar to ILU 5 tha, but 2 months and 10 months depreciation. As refund is in between. As refund is in between. And last question. (2021) January 2021. Darshan Limited purchase a machinery. So better write down in index. Refund in case of deferred GG. Straight line method. Index में लिखो. Refund in case of 8 number है. In case of deferred GG. Refund in case of deferred GG 8 number के इंडेक्स में ब्रैकेट में स्ट्रेट लाइन मेथड. बी कैटेगरी. बी कैटेगरी. Refund in case of deferred GG. Darshan Limited purchased a machine on 1st April 2016 for 130 lakhs. Useful life 4 years. Government grant 40 lakhs. And salvage value 60 lakhs. Decides to treat the grant as deferred income. Deferred income ये grant है. So very simple answer. Yes, write down the answer. Index में लिख लिया ना? हाँ. Write down the answer. Balance in asset. Serial number, particulars, computation, rupees. Roman 1 cost. But case 2 है cost. So don't deduct government grant 130 lakhs. Roman 2. Roman 2 less depreciation. Less depreciation. 16, 17, 17, 18, 18, 19. Same depreciation. 130 minus salvage value 60 divided by life of the asset 4 years. So 130 minus 60 divided by 4. 17.5. 17.5, 17.5. Same, huh? Straight line method, na? Depreciation SLM. Roman 3, balance. 1 minus 2. 130 minus 17.5. 17.5. So balance is 77.5. 77.5. Depreciation 1920. रोमन 4 में. रोमन 3. यस माइनस अभी रिफंड हुआ ना
सो रिफंड हुआ तो इधर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 minus 1 year. Okay, because remaining life is 1 year. 3 years are over. Remaining life after refund. Remaining life after refund. So answer is 17.5. Easy. Say balance in deferred GG. Balance in deferred GG. Roman 1. Roman 1. Roman 1. Grant received. Given 40 lakhs. Roman 2. Amortize of grant. Amortize of grant. 16, 17, 17, 18, 18, 19, 40 divided by 4, 10, 10, 10. Same. Balance in deferred GG. Balance in deferred GG. 1 minus 2, 10. So entry will be deferred GG account debit. Balance 0 हो जाएगा. Balance now 0. To bank. To bank 40. And P&L account debit 30. P&L account debit 30. So P&L को कितना डेबिट होगा? 30 rupees. In year 4. Every year, P&L to deferred GG. Sorry. Every year, deferred GG to P&L 10-10 for 3 years. For 3 years, deferred GG to P&L 10-10. और रिफंड के केस में एंट्री deferred GG P&L to bank. So beta, we have finished with this accounting standard 12. I hope you enjoyed this session. S12 आपको अच्छे से समझ में आया. Don't skip a single question in option. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एंड मजा भी आया मुझे आपके साथ. तो अभी मिलते हैं परसों नेक्स्ट सेशन और सिंपली कैलकुलेट करके दिए हैं. प्लीज गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस आज ओनली. आज ही पूरे क्वेश्चंस एक बार देख लेना और सॉल्व करना. ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे.